हेलो। सो नेक्स्ट देखिबा कोन देखा क्वेश्चन नंबर 5 जाएंगे अपडेट इतना क्वेश्चन नंबर बता दिया 6 का कुछ। सो क्वेश्चन 6 कौन छै देखो सो क्वेश्चन 6 रे अछि कोन ना शो दैट द फंक्शन defined by fx is equal to like 1 if x is rational and 0 होबो यदि if x is irrational is discontinuous हम टेस्ट करे अछि discontinuous होछि को पॉइंट क्वेश्चन टा टिके भूल लिखा छै ठीक फॉर ऑल x is not equal to 0 होबो ठीक अछि फॉर ऑल x is not equal to 0 belongs to R सो आमे एटा टेस्ट करबा सो फंक्शन कोन अछि ठीक से बुझि नबा फंक्शन कोन अछि हमर 1 होबो इफ x टा कोन होछि रेशनल नंबर होबो ठीक अछि एंड 0 केते बेला होबो इफ x इज इरेशनल तो को पॉइंट टेस्ट करबा एनी रियल नंबर ठीक अछि r अछि जोडा कोन होतो नॉट इक्वल टू 0 ना त सेति पे कोन नबा अच्छा यार प्रूफ ता देखो कोन आछो सो जहा गिवन अछि आगे लिखि दबा गिवन दैट fx is equal to केते केते रहला 1 if x is rational and 0 if x is irrational ना सो दी डाटा हम बकरे रहला हमको टेस्ट करे अछि एमती गोटे नंबर जोटा कि नॉट इक्वल टू 0 होतो नंबर टा कोन होतो रियल नंबर होतो ठीक है तंगरे हम कोन करबा गोटे रियल नंबर नबा लेट x is equal to a be any real number अच्छा नॉन जीरो लिख दिया बेटर होगा any नॉन जीरो रियल नंबर ठीक है ताले x गोटे नंबर नेले जोटा कि कहउछ नॉन जीरो माने जीरो होबो ना x is equal to n ले तो हम बर्तन टेस्ट करिया तार कंटिन्यूटी टेस्ट करिया आगु देखो x टा गोटे रियल नंबर x equal to a गोटे रियल नंबर नेले रियल नंबर माने से कोन हे पारे मे बी रेशनल हे पारे किंबा इरेशनल हे पारे ठीक है सो दीटा सारा केस में हमको एठी टेस्ट करिया पे पड़ियो जदी x टा रेशनल होची कोन होबो आ जदी x टा x equal to a irrational होची ताले कोन होबो ठीक है सो देखिबा टेस्ट करिया कोन आछी हमर रिजल्ट देखा प्रथम नवा कोन if x is equal to a is rational ठीक है यदि x टा कोन होची x equal to a जो होची सेटा गोटे रेशनल नंबर हबो ताल देखा x टा रेशनल हले फंक्शन रो फंक्शनल वैल्यू केते आछियो 1 आछियो ठीक है ताले एटा लिखबा कोन since x is equal to a is rational that implies function of a is equal to लिख परिया जते हमें 1 फंक्शन रो फंक्शनल वैल्यू पाइ गेले 1 बर्तमान कोन करबा तार लिमिट फाइंड आउट करया now to find the limit of the function fx ठीक है at x is equal to a ताले लिमिट फाइंड आउट करया पे आगो पास करया कोन लेफ्ट हैंड लिमिट केते आछे देखो दैट इज इक्वल टू x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू a minus function of x that is equal to limit h tends to 0 function of केते आछियो a minus h ताले एठी गोटे कथा देखो सपोज हम पाखे x is equal to a गोटे पॉइंट रहला एटा कोन अछि गोटे
रेशनल नंबर अच्छे ये कौन अच्छे रेशनल अच्छे जदि आम ए रु पछकू जीवा ए माइनस एच करवा ताले आम जो भी नंबर टा पाइबा ठीक अच्छे ए पाखापाखि जो भी नंबर टा पाइबा से कौन हम मे भी रेशनल हो पारे ठीक अच्छे रेशनल हो पारे और मे भी कौन हो पारे इरेशनल हो पारे किसी आम कहि परिबा नहीं तेणु करी एठी हमर कोन आसीबो दिस इज इक्वल टू एठी दीटा पॉसिबिलिटी आसीबो गोटे आसीबो केते 1 कोन पे 1 आसीबो देखो सो दीटा पॉसिबिलिटी आसला आगो पॉसिबिलिटी गुडा लिखि दबा मे भी कोन हो पारे a माइनस h इज रेशनल हो पारे किंबा a माइनस h इज कोन हो पारे इरेशनल ठीक अछि तले वर्तमान क्वेश्चन रे देखो कोन अछि जदी x टा रेशनल होउची तार तार वैल्यू केते आसीओ 1 आसीओ जोटा लिखि जे हमें if x is rational ताले फंक्शन रे वैल्यू होबो 1 and if x is irrational ताले वैल्यू केते आसीओ 0 आसीओ ताले एठी सेमती a minus h टा जदी रेशनल आसला ताले रिजल्ट आसीओ केते 1 और जदी a minus h इज irrational होबो ताले रिजल्ट आसीओ केते 0 ठीक अछि से सिमिलर वे रे हमें राइट हैंड लिमिट टा कोन पाइबा दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to a plus fx that is equal to limit h tends to 0 it is your function of a plus h है so जार वैल्यू केते आसीओ एठी अगेन से सेम केस a plus h may be rational हो पारे और a plus h may be irrational हो पारे ठीक अछि रेशनल लेवल केते आसीओ 1 इरेशनल लेवल केते आसीओ 0 ताले देखो एठी कोन होउची ना हमर जो वैल्यू टा आसी जेतोले हम लिमिट फाइंड आउट करिया पे ट्राई करछे वैल्यू टा 1 नहीं पारे किंबा 0 हो पारे डिपेंड करछे का ऊपर a h ऊपर एठी जेंती a h ऊपर तो एठी हम पर्टिकुलर वैल्यू कहि पारना जे लिमिट टा 1 होबो कि 0 होबो कि अलगा किछि होबो ठीक अछि जेहेतु हम एठी कोनसी गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पाई पारु नाहंती तंकुरे हम कोन कहबा एथरे लिमिट एग्जिस्ट करूनी बोली कहि पारबा तंकु लिखा कोन हियर the limit of function fx does not exist ठीक है 4 पॉइंट रे at x is equal to a अब एटा कोन होची एठी रेशनल नेतले ठीक है एथरे हम कोन हला लिमिट एग्जिस्ट करिला नाही तंकुरी कोन हो एठी हमरो अच्छा हमें गोटे केस टेस्ट करले बर्तमान आ गोटे केस पुनी बाकी अछि रेशनल पय गोटे गला आ गोटे कोन अछि हमरो इरेशनल पय ठीक अछि x टा जदी कोन हला हमरो रेशनल हला बर्तमान कोन टेस्ट करबा x टा जदी इरेशनल हो if x is equal to a अच्छा a तो नहीं चाहते तो b नहीं ले x is equal to b is irrational ये जदी कोन जो हमरो इरेशनल नंबर होबो ताले कोन करबा देखो ताले ताले देखो since x is equal to b is irrational that implies function of b ताले केते आसीबो देखो irrational पे हम पाखरे क्वेश्चन रे कोन अछि irrational पे कोन अछि देखो if x is irrational ताले फंक्शनल वैल्यू केते आसीबो 0 हे जिवो हैला ताले एठी लिखा कोन फंक्शन ऑफ b इक्वल्स टू होला 0 ताले वर्तमान कोन करबा now to find the limit of the function fx at x is equal to b so x is equal to b पॉइंट रे हम फंक्शन रा लिमिट फाइंड आउट करबा ताले केते आछ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट this is equal to limit x tends to b minus function of x that is equal to limit h tends to 0 केते आछियो function of b minus h so इठी सेमते हम कोन देखिबा दीटा पॉसिबिलिटी आछियो जदी b minus h is rational ता पय किछि गोटे आछियो वैल्यू और जदी b minus h is irrational ता पय गोटे आछियो वैल्यू ना so b minus h जदी irrational हो केते आछियो हम पकरे वैल्यू so irrational हो 1 आछियो irrational केते आछियो 0 आछियो
अच्छा बी एटा रहला बी माइनस एच माने एपटे पळे आसीबा ठीक अछि तो एटा मे भी रेशनल हे पारे इरेशनल भी हे पारे ठीक अछि सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जतले बाहर करबा केते आसीबो लिमिट x टेंड्स टू b प्लस f of x this is equal to limit h tends to 0 function of केते आसीबो b plus h so which is equal to केते आसी देखो 1 आसीबो जदि b plus h कोन हो is rational and 0 आसीबो if b plus h is कोन जो हमर एठी irrational तले एठी भी हम कोन लिखले से सेम केस देखले एठी भी हम प्रॉपर वैल्यू पाई पाउना तेन कर हम कोन कहबा here the limit of function fx at x is equal to b which is irrational you see it does not exist you see तले x is equal to b जोटा irrational ला सेथिरे भी exist करला नै जेतु limit existing करूनी तेन कर हम कोन कहि परबा here the function fx is discontinuous point रे at any real number non-zero real number लेखा any non-zero real number x है सेटा ला तुम्हारा प्रूफ लेखला 6 नंबर और तो देखा 7 नंबर क्वेश्चन सो 7 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 7 so question number 7 our पाखरे कोन अछि देखो एठी भी सेही टाइप रो क्वेश्चन रहला एठी कोन रहछि x टा जदी रेशनल हो ता पय अछि केते हम पाखरे फंक्शन अछि x इरेशनल हले केते अछि हम पाखरे -x तो एठी दीटा जिंस प्रूफ करिया पय कहै छी कोन अछि देखो जो फंक्शन गिवन अछि फंक्शन ऑफ x that is continuous at x is equal to 0 फंक्शन ना कंटीन्यूअस हो 0 रे एंड डिसकंटीन्यूअस हो अदर पॉइंट से 0 को छाड़ के अलगा सब पॉइंट से कोन हो डिसकंटीन्यूअस हो ठीक अछि तले आगो फर्स्ट x is equal to 0 पॉइंट टेस्ट करबा ठीक अछि तले तार प्रूफ देखो so given जहा छै हम से लिखबा here given that if x is equal to x if x is rational and minus x if x is irrational हैला सो जहा गिवन रहला हमें से लिखि देले तले फर्स्ट हमें को पॉइंट टेस्ट करबा at x is equal to 0 तले का first we check the continuity of function fx at x is equal to 0 तले का so अच्छा x is equal to 0 0 टा कोन that is a rational number है rational number जाउची तंकरी क्वेश्चन जो आसीबो इटे जो फंक्शनल वैल्यू टा आसीबो then value of function fx at x is equal to 0 is केते आसीबो ताल देखो f of x is equal to हो केते एठी x कोन पे f of x is equal to x हो because x टा एठी कोन अछि x is equal to 0 होची रेशनल नंबर तेन करी हम पय फंक्शन जो रहबो fx is equal to x हो ताले फंक्शन ऑफ 0 टा केते आसीबो हम पाखरे 0 आसीबो एला ला तार फंक्शनल वैल्यू वर्तमान कोन करबा तार लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करबा ताले लिखबा कोन नाउ to find the limit of the function fx ହେଲା ताले केते आछी देखो
left hand limit that is equal to limit x tends to 0 minus f of x that is equal to limit h tends to 0 केते आछियो हम पाखरे function of 0 minus h so function केते आछी एठी x is equal to 0 पॉइंट x अछि हमको केते रखिबा एठी that is equal to limit h tends to 0 केते आछियो एठी minus h that is equal to केते 0 बुझलो ना एठी फंक्शन टा कोन होची x हमें 0 पॉइंट रे टेस्ट करछे तंगे ता पय फंक्शन अछि हम केते f(x) = x अछि ना तंगे 0 होला सेंते राइट हैंड लिमिट केते आछो देखो राइट हैंड लिमिट होला लिमिट x tends to 0 plus fx so that is equal to limit h tends to 0 केते रहबा पे फंक्शन ऑफ 0 plus h that is equal to limit h tends to 0 हम करबा केते h that is equal to 0 so here हम कौन पहले left hand limit is equal to right hand limit is equal to function of 0 therefore the function fx is it therefore function fx is continuous at x is equal to 0 जोटा कि कोन छोटे रेशनल नंबर होचे है ना वर्तमान कोन देखिबा जदी आमे गोटे नंबर नबा रियल नंबर नबा जोटा कि कोन होची not equal to 0 now to check the continuity point रे at x is equal to a which is not equal to 0 and belongs to कोन होची r जे कोन सी रियल नंबर r रे रोच है ना ताल देखो तापे कोन करबा एटा सोटी माने क्रिटिकल प्रॉब्लम कोन कंफ्यूजन तो कहबानी और कोन कहबा प्रॉब्लम सेते कष्ट नाही किंतु टिके केचरा अछि उडा सब ना let x is equal to a be any rational number फर्स्ट हमें कोन नेले ये जो x is not equal to 0 नेले जो a नंबर टा नेले सेटा कोन होची ओते रेशनल नंबर होची such that x is equal to a which is not equal to 0 and belongs to r then for x is equal to a x is equal to a पय हमर फंक्शन केते आछियो रेशनल नंबर पय केते अछि देखो यदि हमर फंक्शन सॉरी x is equal to a टा रेशनल हबो तले रेशनल पय हम पाखरे फंक्शन केते अछि x अछि ठीक अछि हम हम लिखबा केते fx is equal to x that implies f of a is equal to हम पाखरे रहबा केते a रहि जिवो बर्तमान कोन करिया तार लिमिट फाइंड आउट करिया now to find the limit of the function fx is it fx रो बर्तमान लिमिट फाइंड आउट करबा को पॉइंट रे at x is equal to a the left hand limit केते आछे देखो left hand limit is equal to limit x tends to a minus function of x that is equal to limit x tends to sorry x नो बर्तमान आछो केते h tends to 0 function of केते रहिजो a minus h which is equal to देखो a टा सिना हमरो रेशनल हे गला बट a minus h टा मे बी रेशनल हे पारे मे बी नॉट ठीक है मे और मे नॉट रेशनल हे पारे इरेशनल भी हे पारे तले एठी सिमिलरली दीटा केस आसला कोन आसीबो ओटा आसीबो a minus h केतबेला हबो if a minus h is rational ना so a minus h टा जदी रेशनल हबो ताले a minus h हबो आउ if a minus h is irrational जदी irrational हे जिवो ताले केते आसीबो एठी minus of a minus h ठीक है सो दीटा केस आसला राइट हैंड लिमिट भी सेम दीटा केस आसीबो कोन कोन आसीबो डायरेक्टली मु लिखि दोची x tends to a plus fx this is equal to आसीबो केते दीटा केस आसीबो
a plus h केतेबेले हबो if a plus h is rational and minus of a plus h हबो केतेबेले if a plus h is irrational ना सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट रे हम एठी भी सेमती किसी पर्टिकुलर वैल्यू पाई पारू नाहंती पर्टिकुलर वैल्यू पाई पारू नाहंती त लिमिट ही एग्जिस्ट करबनी त लिखा कोन हियर limit of fx does not exist यदि लिमिट ही एग्जिस्ट करू नहीं ताला हम कोन करबा at x is equal to a आ एटा कोन था हमर रेशनल था ठीक अछि therefore fx is not continuous at x is equal to a एटा कोन छी रेशनल अछि ना वर्तमान सेकंड केस को आसीबा जदी इरेशनल नंबर नबा है let x is equal to b be any irrational number जदी ये irrational होला ताले कोन आसीबो एडी फंक्शन केते आसीबो then fx is equal to केते आसीबो -x कोन पे -x होची because देखो फंक्शन नहीं अछि यदि x टा इरेशनल होउची ताले हमर केते आसीटी -x गिवन अछि त फिर हम से लिखले है ताले फंक्शन ऑफ b केते आसीबो f of b this is equal to minus of b है जो ठीक है जी ये वाला फंक्शनल वैल्यू बटन लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करें नाउ टू फाइंड द लिमिट of the function fx at x is equal to b तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है देखो लिमिट x tends to b minus f of x that is equal to limit h tends to 0 function of b minus h that is equal to कितना है देखो अच्छा b टा जदी इरेशनल होउची ताले b पूर्वरु जो नंबर टा रहबो b minus h सेटा मे बी रेशनल हे पारे मे बी इरेशनल हे पारे एठी भी दीटा केस आसला कोन आसी if b minus h is rational जदी b minus h टा कोन हिजो रेशनल हिजो ताले केते आसमा बकरे एठी रेशनल ले सिंपली b minus h इन होइबो बट if b minus h is irrational यदि ये irrational हो ताले केते आसबो माइनस ऑफ b minus h सिमिलरली RHL टा केते आसबो देखो RHL is equal to limit x tends to b plus function of x जार वैल्यू आसबो केते सेम b plus h आसीबो and b minus minus of b plus h केते आसीबो if b plus h is rational and if b plus h is irrational ठीक है सो तबे हमरो ई टाइप रो आछला सब रिजल्ट तो एठी भी सेमते हम कोन देखले इरेशनल पय हम कोन देखुचे किसी प्रॉपर वैल्यू पाई पर ना दे ताले कोन लिखबा हियर fx is sorry limit tag लिखो here limit of the function fx does not exist at x is equal to b जोडा कोन আছে हमर इरेशनल আছে हला सो जेतु लिमिट ही एग्जिस्ट करनी तेंगुरी कोन कर पारिबा therefore जो फंक्शन रहला fx is not continuous at x is equal to b आ जोडा कोन আছে इरेशनल আছে हला सो रेशनल रे भी कंटीन्यूअस हला नहीं किंबा इरेशनल रे भी कंटीन्यूअस हला नहीं हमको हम कोन कर पारिबा hence the function fx is discontinuous at x is not equal to 0 belongs to R ठीक है x is not equal to 0 and x belongs to
r एथिरे से कोन जो डिसकंटीन्यूअस इज सो एटा थिला तुमर को क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर अछि 8 एटा भी सेही टाइप रो प्रॉब्लम अछि कोन अछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 कोन अछि So question number 8 रे कोन अछि so that the function fx defined by this is discontinuous everywhere except x is equal to 0 x is equal to 0 छोड़ के बाकी सब पॉइंट से कोन अछि डिसकंटीन्यूअस होछि ता माने x is equal to 0 से कोन हो कंटीन्यूअस हो ताले आगो सेटा हम प्रूफ करबा जे x is equal to 0 रे से कोन होछि कंटीन्यूअस होछि ठीक अछि तबे कोन अछि देखो given that fx is equal to x केतेबेले if x is rational ठीक है and 0 केतेबेले if x is irrational सती डेटा रहला जहा गिवन अछि बर्तन हम कोन करबा 0 पय आगो टेस्ट करबा हां फर्स्ट we check the continuity of the function fx at x is equal to 0 तब केता अछि देखो सो फंक्शन x is equal to 0 अच्छा 0 टा कोन होछि हमरो रेशनल नंबर तब तमे फंक्शन वैल्यू केते आछो देखो देन fx is equal to केते रहउछि हम रखले x ताले फंक्शनल वैल्यू केते आछो देन वैल्यू ऑफ फंक्शन और implies that लिख दो that implies f of 0 is equal to होगा केते हमरो 0 हो जियो ठीक अछि ए गला फंक्शनल वैल्यू बर्तमान कोन करबा now to find the limit of the function fx कोथरे at x is equal to 0 ताल केते आछो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो लिमिट x tends to 0 minus fx that is equal to limit h tends to 0 function of केते आछो 0 minus h so that is equal to limit h tends to 0 function of minus h that is equal to केते आछो हम रखले minus h sorry limit h tends to 0 minus h this is equal to 0 similarly right hand limit ta kete asyo limit x tends to 0 plus fx that is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h that is equal to limit h tends to 0 kete rahba h that is equal to hela kete 0 so here kon paila hame here left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value f of 0 kete asila 0 asila therefore the function fx is continuous point at x is equal to 0 वर्तमान देखिया जदि x is not equal to 0 होचे now if x is not equal to 0 जदि x टा 0 होबो नाही ताले हम पाखरे कोन रहबो ताले if x is not equal to 0 and x is equal to a that belongs to R b any rational number ताले बर्तमान कोन नेले हमें जे कोन से गोटे नंबर नेले x is equal to a जोटा नॉन जीरो होची एंड से कोन होची गोटे
रियल नंबर भीतर होची जे कि कोन होची रेशनल नंबर होची ताले रेशनल पे कोन आछी देखो देन fx टा केते आछियो देखो रेशनल पे केते अछि हम बखने क्वेश्चन रे रेशनल पे कोन अछि देखो if x is rational ताले वैल्यू केते आछी x ताले fx is equal to होची हम बखरे x ह तेबे फंक्शन ऑफ a केते आछियो a रहइबो ठीक अछि now to find the limit of the function fx वो पॉइंट रे at x is equal to a जोटा कोन होची हमरा रेशनल नंबर होची ना the left hand limit that is equal to केते आछियो limit x tends to a minus f of x that is equal to limit x tends to बर्तमान x में लिखिया केते h tends to 0 f of केते आछियो a minus h सो यार वैल्यू सेमति केते आछियो देखो जदि a minus h is rational तापन गोटे वैल्यू आछियो और जदि a minus h is irrational तल तापन गोटे वैल्यू आछियो सो रेशनल पे केते अछि हम बकरे जदि x टा रेशनल होची तार हम बकरे होची केते x इन होइबो और x टा जदि रेशनल हो तार वैल्यू आछियो 0 तल देखो केते आछी सो a minus h is rational तामने रहइबो केते a minus h जदि a minus h टा irrational हो तार आछियो केते 0 सेम केस आछियो राइट हैंड लिमिट जोतरा आछियो कोन हमरो a plus h केतबेले आछियो if a plus h is rational and 0 if a plus h is irrational तो एथरा में कोन होचे ये जे प्रॉपर वैल्यू एठी हम पाई पाले नाही ना देयरफॉर हम कोन कहबा और हियर fx sorry limit of fx it does not exist को पॉइंट रे at x is equal to a जोटा कोन थला रेशनल थला हैला रेशनल रे हमर कोन हला किछ लिमिटिंग वैल्यू पाई परले नाही वर्तमान में देखिबा कोड देखिबा irrational रे let x is equal to b is not equal to 0 and b belongs to r be any irrational number जे कोन छोटे irrational number हमें लेले ताले केते आछो देखो then the functional value आछो fx is equal to केते आछो देखो irrational में कोन थला हम बकरे if x is irrational then हमर कोन थला 0 थला सिंपलिटी आछो केते 0 ताले फंक्शन ऑफ b इक्वल्स टू केते आछो 0 आछो वर्तमान कोन करबा लिमिट फाइंड आउट करबा now to find limit of the function fx को पॉइंट रे at x is equal to b ताले लेफ्ट हैंड लिमिट केते आछो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to limit x tends to b minus f of x that is equal to limit h tends to 0 function of kete aସୁଛି b minus h that is equal to again it is the same case जदि b minus h टा रेशनल हो ता पे गोटे आसीबो रेशनल आ गोटे आसीबो b minus h is irrational सो रेशनल पे केते आसीबो से b minus h आसीबो irrational हेलो केते आसीबो 0 सिमिलरली राइट हैंड लिमिट आसीबो केते आसीबो b plus h जदि b plus h टा कोन हो if b plus h is rational and 0 हो if b plus h is irrational
ना। सो एथरे भी सेमते हम कोन देखले लिमिट एग्जिस्ट करूँ हियर limit of the function fx does not exist at x is equal to b तेणुकरी आम कौन कनक्लूड हेले therefore fx is discontinuous देखो जिते रेशनल ले से भी डिसकंटिन्यूअस है हाँ कि नहीं लिमिट ही एग्जिस्ट करलानी लिमिट एग्जिस्ट करवानी माने कौन हम से डिसकंटिन्यूअस हो जियो ठीक है सिमिलरली एठी भी कौन देखले एठी भी लिमिट एग्जिस्ट करनी लिमिट एग्जिस्ट करनी माने से कौन हम डिसकंटिन्यूअस जियो क्योंकि fx is discontinuous for any real number x belongs to R but continuous co-point रहला at x is equal to 0 that belongs to R तो एतिके थिला तुमरो तीनटा प्रॉब्लम ओडा टिके भलो भाबरे देखि नबो टिके केसरा पाठ अछि ओडा विशेष एमति किछि कष्ट नाही बुझले आराम से निजे सॉल्व करि पारिबो हला सो 6 रु 8 जे कंप्लीट हला नेक्स्ट क्लास रे हम पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करबा थैंक यू वेरी मच